Student, I am Professor Mane. I will be taking your subject called EDC, Electronic Devices and Circuit. This is a core subject. This is the first core subject in your electronics and telecommunication engineering branch. So what exactly we are going to study in this particular subject, that you will come to know as we proceed with the sessions. First of all, what is the importance of this particular subject? ये जो सब्जेक्ट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है? Student, you people are doing your engineering in a branch called electronics and telecommunication engineering. So your degree name starts with the electronics, and this is the subject of electronics. So in this particular subject, we'll be studying in detail about the electronic devices, electronic circuits, their analysis, their designing, and their application. Now, from degree point of view, from exam point of view, the subject is going to be very important. The subject will be having 80 marks university exam. There will be the IA exam. There will be a 100 marks theory exam is there, out of which 80 marks is for the university final exam, and internal assessment exam of 20 marks. You have 25 marks term work, and you have 25 marks practical cum oral examination. So overall weightage of this particular subject in your curriculum is going to be 150 marks. The overall weightage of this particular subject in your curriculum is going to be 150 marks. Now this is from exam point of view. Now this particular subject is completely conceptual. Until and unless you don't understand the concept behind the topics, you will not be able to cope up with this particular subject, and you will not be able to pass also. So this particular subject is completely conceptual. It is a core subject. We have plenty of analysis in it, and सबसे important, we have designing also. So we will be designing the various electronic circuit in this particular subject. Now, what is the importance of this particular subject in your final career? कि डिग्री के बाद ये सब्जेक्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है क्या? So let me tell you one thing, students. After the completion of your 4-year engineering, you people go in a job market and you will try to find the job. Now, most of the people, most of the engineers, they get the job either in software or in data science or in IT industry. Some students goes for the MBA also. But student, what does exactly the combo software engineer does? Software engineer क्या करता है? तो software engineer, he writes the software program using either a C language or C++ language or Java language, or the latest language is the Python language, R language. So using these particular languages, a software engineer writes a code, and this code is run on a machine, and that machine is known as a computer. And you know that in a computer we have a motherboard, and on the motherboard we have very one important thing called as a processor. So motherboard के ऊपर प्रोसेसर होता है, और वो प्रोसेसर तुम्हारा कोडिंग को एग्जीक्यूट करता है. यू टेक एग्जांपल ऑफ योर मोबाइल फोन. मोबाइल फोन के अंदर भी हम लोग कहते हैं एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है. अरे बाबा, उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम है, बट देन हु एग्जीक्यूट द ऑपरेटिंग सिस्टम? इट इज द माइक्रो प्रोसेसर विच इज प्रेजेंट इनसाइड माय मोबाइल फोन. दैट माइक्रो प्रोसेसर executes my Android operating system and my programs, and it runs my applications. You take example of networking. In networking we have router, we have server, we have switches, we have hubs, and everywhere राउटर के अंदर क्या होता है? हार्डवेयर सर्किट. उसके अंदर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर. स्विच के अंदर क्या होता है? स्विचिंग सर्किट. स्विचिंग सर्किट को कौन कंट्रोल करता है? माइक्रो प्रोसेसर. So what I want to say here is that whatever the application we people are presently using, in every application, whether it is a mobile phone,
whether it is my router, whether it is my computer, whether it is my laptop, whether it is my switch, each and every electronic gadget requires a hardware. And nowadays, in every hardware, the important part is the microprocessor. Question is, who designed the microprocessor? Question is, who tests the functionality of my microprocessor? Question is, who fabricate the microprocessor? Question is, who developed the hardware? The microprocessor is designed, tested, fabricated, and developed by a special engineer known as VLSI engineer, very large scale integration engineer. The branch of electronics engineering, which design, test, fabricate, and manufactures the various hardware ICs. This branch of electronics engineering is known as VLSI engineering. तो स्टूडेंट, जब तक VLSI इंजीनियर माइक्रोप्रोसेसर नहीं बनाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियर कुछ भी नहीं कर सकता है. सॉफ्टवेयर इंजीनियर को उसका कोडिंग रन करने के लिए उसे माइक्रोप्रोसेसर चाहिए. और वो माइक्रोप्रोसेसर कौन डिजाइन करता है? तो दैट माइक्रोप्रोसेसर इज डिजाइन्ड, implemented, fabricated, manufactured by an engineer called as a VLSI engineer. So branch of electronics engineering where you design the electronics, you design the various digital and electronic circuit, you test the various electronic analog and digital circuits, you check their functionality, you fabricate them, and finally you come out with the ICs called as the integrated circuit. All this particular branch of engineering is known as the VLSI engineering. And the VLSI so in the VLSI engineering, the engineer design and implements the various hardware. The question is, who can work, who can be a VLSI engineer? Only two branch engineers can be a VLSI engineer. One, the engineer from pure electronics branch, and second, the engineer from the engineers from electronics and telecommunication branch. Only these two branch engineers can work in VLSI field. Only these two branch of engineers gets the thorough knowledge about the VLSI. The question is, yes, मैं VLSI सीख लूंगा, आगे जाके जैसे जैसे मैं फाइनल ईयर में पहुंच जाऊंगा मैं VLSI सीख लूंगा. What is the job guarantee? Answer is, there are plenty of jobs available in India for testing and designing purpose. Okay, it is no doubt about it कि in India we don't manufacture the hardware. हम इंडिया में fab नहीं है. The fab is a unit where your IC gets manufactured. IC फैब्रिकेट करने वाली जो कंपनी होती है उसे हम फैब कहते हैं. अनफॉर्चुनेटली हमारे इंडिया में फैब नहीं है. तो फैब कहाँ पे है? तो फैब चाइना में है, फैब जापान में है, फैब यूएसए में है, फैब कनाडा में है. ओके, हमारे इंडिया में फैब नहीं है. बट देन इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे इंडिया में VLSI का काम नहीं होता है. The world's fastest microprocessor is designed in Bangalore. हमारे जो हम लोग जो आज फास्टेस्ट माइक्रोप्रोसेसर यूज करते हैं, that particular fastest microprocessor is designed in Bangalore. So in India, mainly we perform under the VLSI domain, mainly we perform two types of jobs. One is the designing job and other one is the testing job. मतलब some teams of engineer design the hardware and then other team of engineer test its functionality. So plenty of designing and testing jobs are available in Pune, in Bangalore, in Hyderabad, and in Noida. Fabrication jobs are not there in India because we don't have the fab company, and that's why the fabrication jobs are not there. But recently I heard that the Tata company is now coming into in this particular field, and they will try to build up our own fab company, but it will take some time, no doubt about it. So what is the job profile?
The plenty of VLSI jobs are still available in India. Only thing is that the VLSI company require the skilled engineer. If you are skilled, plenty of VLSI company are there to offer you job both in India and abroad. Let me give some examples. One of my student, Samiksha Zog, she passed out her degree 2 years before, and then she completed 6 months postgraduate diploma in VLSI from CDAC Pune. Okay, so initially she was in one company called as Digit Karke in Hyderabad. Now she switched to the Wipro company recently 2 months before. Her package is 8 lakh rupees per annum. One of my student, Akash Tadmare, he completed his BE 3 years before. Then he went to the USA, completed his master's in VLSI. Presently, he is working in Intel company as a front-end engineer. One of my student, Shreya Owalekar, she completed her BE in Electronics and Telecommunication 2 years before. Then she completed her MS in VLSI from Texas, Dallas, USA. Presently, she is working in Qualcomm company as a back-end engineer. So plenty of jobs are available in VLSI, both in India and abroad. But unfortunately, why I'm telling you this, why I'm taking 5 to 10 minutes of you people, because many of Mumbai students are unaware of this particular field. सब लोग सॉफ्टवेयर के पीछे भागते हैं. यस, जहां पे जॉब होगा, जहां पे सैलरी मिलेगी, तो वहां पे पीपल जाएंगे ही जाएंगे, नो डाउट अबाउट इट. बट इफ यू वांट टू गो टू सॉफ्टवेयर, गो इट, नो डाउट अबाउट इट. बट देयर इज अ वन मोर फील्ड जो तुम्हारा खुद का फील्ड है, इलेक्ट्रॉनिक्स का फील्ड है, टेलीकम्युनिकेशन का फील्ड है, कोर फील्ड है, एंड दैट फील्ड इज कॉल्ड एज अ VLSI फील्ड. एंड इन VLSI फील्ड there is a very good career in the VLSI field, because once you become an expert VLSI engineer, then you don't run behind the job, rather the job run behind you. Because अगर मैंने 100 इंजीनियर सामने खड़े कर दिए, तो हार्डली तुमको 2 या 3 VLSI इंजीनियर उसमें मिलेंगे, because plenty of people runs behind the software job, okay, and very less people goes to the VLSI job. So there is a crunch of engineers in VLSI domain, both in India as well as in abroad. The people who are doing their masters in USA and those who are doing masters in VLSI in USA, they immediately get the job, because there is a crunch of engineer in VLSI. हार्डवेयर बनाने वाले इंजीनियर बहुत कम है, सॉफ्टवेयर पे काम करने वाले इंजीनियर बहुत है, मगर हार्डवेयर डिजाइन करने वाले इंजीनियर बहुत कम है. So there is a crunch of engineer in hardware, स्पेशली इन IC डिजाइनिंग. ओके, तो IC डिजाइनिंग में इंजीनियर्स की कमी है, इसलिए VLSI डोमेन में इफ यू आर अ स्किल्ड पर्सन, यू इमीडिएटली गेट्स अ जॉब. इफ यू आर अ स्किल्ड पर्सन, यू इमीडिएटली गेट्स अ जॉब, प्रोवाइडेड दैट you have to prove your skill. ओके, तो आई होप स्टूडेंट तुमको एक बात समझ में आया होगा कि ये जो मैं जिस डोमेन के बारे में बात कर रहा हूँ, ये तुम्हारा खुद का अपना डोमेन है, VLSI डोमेन, जिसमें तुम्हारी डिग्री कर रहे हो. ओके, तो मैं VLSI डोमेन के बारे में मैंने क्यों बताया, बिकॉज इफ यू मीन्स, देखो स्टूडेंट्स, आफ्टर 4 years तुमको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन की डिग्री मिल जाएगी. सो यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब इन सॉफ्टवेयर फील्ड, यू विल डेफिनेटली गेट द जॉब इन IT फील्ड, you will definitely get the job in telecommunication field. But if you are thoroughly studying the VLSI domain also, then you will get the opening for the VLSI domain also. तुमको VLSI domain में भी opening मिलेगा. Okay, तो why I am talking about this particular domain, because ये जो particular subject है EDC, this is the step number 1 to enter into the VLSI domain. अगर तुमको EDC अच्छी तरह से आ रहा है, okay, then you people can easily understand the VLSI domain. So student, in this semester, whatever the subject you people are studying, these subjects are going to be important. Each and every subject, Maths 3, EDC, DSD, electrical network, and EICS, electronic instruments and control system. All these subjects are important from your career point of view. अगर you don't study this subject just for the passing purpose, I'm telling you frankly, don't study this subject
just for the passing purpose. You have to study this subject from knowledge point of view. अगर ये सेकेंड ईयर में जो भी सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ रहे हो उसमें अगर तुम्हें थरो नॉलेज आ गया, देन यू विल बिकम अ वेरी गुड इंजीनियर. क्योंकि ये जो सब्जेक्ट्स है ये सब बेसिक सब्जेक्ट्स है, और अगर जिसका बेसिक फंडामेंटल क्लियर होता है देन दैट पर्टिकुलर पर्सन बिकम अ गुड इंजीनियर. अदरवाइज अगर तुम्हारा बेसिक फंडामेंटल क्लियर नहीं होगा देन यू विल बिकम अ बैड इंजीनियर एंड देन इंडस्ट्री मे नॉट एक्सेप्ट यू. ऐसा तुम्हारे ऊपर थप्पा पड़ गया है, वो थप्पा ये है कि यू हैव पास्ड योर सेमेस्टर 1 एग्जाम ऑनलाइन, यू हैव पास्ड योर सेमेस्टर 2 एग्जाम ऑनलाइन, बट देयर इज अ न्यूज़ फॉर यू पीपल, there is a information for you people. Semester 3 exam may be offline. 90% semester 3 exam will be offline, and when you are giving the offline exam you are supposed to write the paper in the examination hall, and in that case for EDC there will be a question paper. In that question paper there will be 6 questions. Question number 1 will be compulsory. In question, each question will be carrying 20 marks. There will be 6 questions. Each question will be carrying 20 marks. And question number 1 is going to be compulsory. In question number 1, you will be having 6 questions, out of which you have to attempt 5 questions, each of 4 marks. Then remaining question number 2 to 6, you have to attempt any 3 questions, each question of 20 marks. And EDC paper is completely analysis and numerical based. You don't get any theory. You don't get any theory. Write down this, explain this, draw this. ऐसा नहीं आएगा. Question आएगा to derive the expression for voltage gain, input impedance and output impedance for common emitter amplifier या common source amplifier. Otherwise you will get the numerical problem based on this, या फिर you will get the designing problem based on this. So first of all, the subject is conceptual. Second, the concept is analytical. Plenty of derivations are there and plenty of numericals are there. And if you understand this particular numericals, अगर तुमको ये numericals अच्छी तरह से आ रहे हैं तो तुम्हें सेमिस्टर 4 में LIC समझ में आएगा. अगर EDC समझ में नहीं आया तो सेमिस्टर 4 में LIC समझ में नहीं आएगा, और EDC एंड LIC समझ में नहीं आया तो सेमिस्टर 4 में PCOM समझ में नहीं आएगा. अगर EDC एंड LIC समझ में नहीं आया तो सेमिस्टर 5 में VLSI समझ में नहीं आएगा. अगर EDC, LIC, PCOM समझ में नहीं आया तो सेमिस्टर 5 में DCOM समझ में नहीं आएगा. और अगर ये सब सब्जेक्ट तुमको समझ में नहीं आएंगे तो तुमको फाइनल ईयर में कोई भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आएगा. इसलिए मैंने तुमको स्टार्टिंग में क्या बोला कि सेमिस्टर 3 में जितने भी सब्जेक्ट है इंक्लूडिंग मैथ्स 3, ओके, मैथ्स 3 भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो मैथ्स 3 में तुम लोग स्टडी करने वाले हो that particular thing you are going to apply in your engineering subject. जो तुम मैथ्स 3 में पढ़ने वाले हो वही तुम लोग आगे जाके तुम्हारे हायर सेमेस्टर में इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में अप्लाई करने वाले हो. So that's why I want to say that semester 3 and semester 4 is very important semester in your engineering. यहाँ पे तुम सब बेसिक सब्जेक्ट सीखने वाले हो, और अगर ये सब्जेक्ट तुमको आ गए तो ही तुम लोग एक अच्छा इंजीनियर बन पाओगे. अगर ये सब्जेक्ट तुमको समझ में नहीं आए और या सिर्फ ये सब्जेक्ट को तुमको पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू अगर तुम स्टडी कर रहे हो तो तुम लोग एक खराब इंजीनियर बन जाओगे और इंडस्ट्री तुम्हें एक्सेप्ट नहीं करेगी. ओके, आगे जाके यू पीपल गिव द गेट एग्जाम. गेट एग्जाम का कंप्लीट पेपर सेमिस्टर 3 एंड सेमिस्टर 4 के सब्जेक्ट पे डिपेंड रहता है. गेट एग्जाम में फाइनल ईयर का एक भी सब्जेक्ट नहीं होता है. Gate exam, whatever the subject you have, all those subjects are there in semester 3 and semester 4. तो यहाँ तक IIT भी इस सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस देती है. और तुम्हारी जो गेट एग्जाम होती है वो गेट एग्जाम में तुम क्या पढ़ते हो तो EDC, DSD, EICS, PCOM, LIC, VLSI, यही सब सब्जेक्ट्स गेट एग्जाम में होते हैं. तो what I want to say that the student, the second year is the very important year of your engineering career. सेकेंड ईयर में तुमको कुल मिला के 10 सब्जेक्ट्स है और 10 के 10 सब्जेक्ट तुम्हें नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू स्टडी करने हैं, ना के पासिंग पॉइंट ऑफ व्यू. अगर ये 10 सब्जेक्ट का नॉलेज तुमको अच्छी तरह से आ गया तो यू विल बिकम अ वेरी गुड इंजीनियर एंड इंडस्ट्री विल बी absorb you very easily. Okay,
So this is about the importance of this particular subject. I will start with my lecture. I will share my screen. Please let me know whether you are able to see my screen or not. Student, can you see my screen? Yes, sir. Okay. So students, let us start with the EDC. I will start with the chapter number 1. But before I start with the chapter number 1, let us do some basics and then we can enter. In chapter number 1, we will be talking about the construction working of PN junction diode, BJT, JFET and MOSFET. So module number 1 is of, as per your university syllabus, the module number is of 5 hours. And in the module number 1, we will be studying the working of following devices: PN junction diode, BJT, JFET and MOSFET. Now before I start with the PN junction diode, we'll do little bit brush up. First of all, student, just consider a circuit. Say I have a bulb. This is a bulb. To this particular bulb, I am applying an electric supply. So I am applying a battery. Oh, there is a switch here. There is a switch here. If the switch is open, if the switch is open, if the switch is open, then bulb do not glows. If I close the switch, if the switch is closed, bulb turns on and emits the light. Now student, when I close the switch, then this bulb will emit the light. Question is why? Can anyone answer? When I close the switch, the bulb turns on and it emits the light. Why it emits the light when the switch is closed? Can anyone answer? Unmute your mic and you can answer. Students, am I audible? Because the circuit gets completed. Okay, circuit gets completed means what? Current To flows. flow through the entire Yes, circuit. very good. Current flows through the circuit. Why current flows through the circuit? When I close the switch, why current flows through the circuit? Circuit is complete. Okay, circuit is complete, switch is closed. Then why the current flows through the circuit? Because of the battery. Okay, because of battery, why current flows? Power supply. Power is voltage into current. My question is, when I close the switch, current flows. Question is why? Why does the current flows? Wires are connected at one end of battery to another end. How, but then why current flows? Potential difference. Yes. Yes. Better define the potential difference for me.
Sir, Harshika. Okay. So student, this is my bulb. These are the two terminals of the bulb. Now, these are my wires. Say these are my copper wires. This is my copper wire connected to the bulb. So this red color is my copper wire. Everyone knows that a copper is a very good conductor and plenty of free electrons are available in my copper wire. Plenty of free electrons are available in my copper wire. Now this is my bulb. This is my bulb. These are the two ends of the bulbs, and the two ends of the bulbs are connected to the copper wire. The two ends of the bulb are connected to the copper wire. Now, what I will do, I will have a battery. What I will do, I will connect a battery. मैंने यहाँ पे बैटरी लगा दिया. This is my battery. So this is my battery. As somebody says, battery gives me potential. Battery gives me potential. Battery produces the potential for me. What is the potential? Okay, the potential is a kind of a force. The potential is a kind of a force. टेक्निकल भाषा में अगर बोला जाए तो पोटेंशियल इज द अमाउंट ऑफ वर्क डन रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू द रिक्वायर्ड पॉइंट. दिस इज द टेक्निकल डेफिनेशन ऑफ द पोटेंशियल. सिंपल लेमैन लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो पोटेंशियल इज अ काइंड ऑफ अ फोर्स. तो व्हेन आई कनेक्ट द बैटरी टू माय कॉपर वायर, जब ये मेरा ब्लैक कलर का बैटरी मैं कॉपर वायर में को कनेक्ट करता हूं, तो ये ब्लैक कलर का बैटरी है, इसके अंदर पोटेंशियल है. पोटेंशियल है मतलब एक फोर्स है. ये फोर्स के कारण ये कॉपर वायर के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है वो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स बल्ब के अंदर में के बल्ब के फिलामेंट में से सर्कुलेट करते हैं. तो इलेक्ट्रॉन विल मूव फ्रॉम बैटरी. ओके, इलेक्ट्रॉन जो है वो बैटरी के फोर्स के कारण कॉपर वायर में से मूव होके अपने बल्ब के अंदर के फिलामेंट में चले जाते हैं एंड फिलामेंट में जाके फिर बैटरी के पास आते हैं. और इस प्रकार से दिस इलेक्ट्रॉन दे कंटिन्यूअसली सर्कुलेट. And when the electron moves from one place to the other place, we say that current flows. So whenever we apply the battery, a force is produced. Because of this force, the electrons which are present is the free electrons which are present in my copper wire. These free electrons, they will circulate through the copper wire and my bulb. And when these electrons circulate through my copper wire and bulb, then we say that current flows. So student, right from your school days, you have studied one law: energy can neither be created nor it can be destroyed, but it can be transferred from one form to the other form. So when the current flows through the copper wire and through the filament of my bulb, then the filament, this is the filament of the bulb, the filament of the bulb produces the heat, and this heat ionizes the gas present inside my bulb, and when the gas gets ionized, then it emits the light. Okay, so the bulb glows because of the potential. So मैंने पोटेंशियल अप्लाई किया. पोटेंशियल अप्लाई करने के कारण एक फोर्स प्रोड्यूस हुआ. वो फोर्स मेरे इलेक्ट्रॉन पे अप्लाई हुआ और वो इलेक्ट्रॉन फिर सर्कुलेट करने लगे. और जब वो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करके पाथ कंप्लीट करते हैं, देन करंट फ्लो होता है. और जब करंट फ्लो होता है तो पावर प्रोड्यूस होती है.
power into time is energy. तो energy produce होती है, and then by using proper device I can convert my one form of energy into other form of energy. Here using bulb I am converting electrical energy into light energy. अगर मैंने यहाँ पे आयन लगा दिया, इलेक्ट्रिकल आयन लगा दिया या हीटिंग कॉइल लगा दिया, तो आई विल बी कन्वर्टिंग माय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू हीट एनर्जी. अगर बल्ब निकाल के मैंने वहां पे फैन लगा दिया, तो आई एम कन्वर्टिंग माय इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी. ओके, तो व्हाई करंट फ्लोज? करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल. करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ पोटेंशियल. तो स्टूडेंट, दिस डेफिनेशंस are very important, and so I think you're already done this is, but we will just do the brush up. So the first definition we are doing in EDC is a potential. So how you define the potential? It is the amount of work done. It is the amount of work done required to bring, it is the amount of work done required to bring a unit positive charge, a unit positive charge from infinity to the required point, to the required point. The unit of potential, the unit of potential is volt. The unit of potential is volt. Now student, when you apply the potential across any conducting material, then current flows. Then how you define the current? You define the current as it is a rate of flow of charges. It is the rate of flow of charges. I will give the time to write. First you listen, then you can write. Yes, Shifa. The second is the current. Okay. Now you define the current. Whenever you take, say this is your conductor. Say this is your conductor. Say this is a piece of conductor. And to this piece of conductor, you apply the external voltage. Now this particular conductor consists of plenty of free electrons. This particular conductor consists of plenty of free electrons, and everybody knows that the charge on the electron is negative. The charge on electron is negative. Okay, so this is my voltage V. So when you apply a voltage V across any conductor, then the charge, this is the positive terminal of the battery, and the charge on the electron is negative. So this electron will get attracted to the positive terminal of the battery, and then they will complete the path through the battery. Then they will go to the other end of the conductor, and like this they will complete the path. And when they complete the path, we say that the current flows. So electron is moving in this direction. The electron is moving in this direction. Then we take the current in opposite direction. Then we take the current in opposite direction. So here you can see that the current is flowing in this direction. Okay. So how you define the current? Okay. तो जितना ज़्यादा electron flow होंगे, जितना ज़्यादा electron move करेंगे, we say the current is more. और जितना कम electron move करेंगे, we say the current is less. So how you define the current? It is defined as
rate of flow of charges. The charges can be either a positive charge or it can be a negative charge. It is defined as it is a rate of flow of charges. Its unit is ampere. Its unit is ampere. Normally we write it as a capital A, and volt we write normally capital V. Okay. So you can write current as current is equal to charge upon time. It is a rate of flow of charges. So it is charge upon time. So we write current as I is equal to Q upon T. So this is the definition for the current. I hope you understood. Any doubts, students? Please reply. No, sir. Okay, do you want to copy this? It's better you copy this so Yes. that I know these are very basic, you already studied this, but by time to time we will require it. So are you copying this, students, or shall I proceed? Anyone Copied, please sir. reply? Students please reply, are you copying this? Yes, sir. आगे जाके बहुत Yes, सारे sir. डेफिनेशन आने वाले हैं. सो बेटर यू मेंटेन योर नोटबुक. सो जब भी पढ़ाई करोगे तो तुमको राइट फ्रॉम बेसिक्स मालूम पड़ जाएगा. आई एम गिविंग यू few minutes time. You please copy this. Just one finish. Yes, sir. Okay. Now mainly we are talking about conductor, insulator, and semiconductor. Especially in this subject, we'll be talking about the semiconductor material. So let us classify the material. Everybody knows that a conductor is a material which allows the electric current to pass through it. Example, copper, aluminum, gold, silver. These are the material called as conductor. Insulator is a material which do not allows the electric current to pass through it. Example, paper, mica, wood, rubber. These are my insulator. The question is, why conductor conducts the current and why insulator do not conduct the current? The answer lies in conduction band and valence band. The answer lies in conduction band and valence band. I know you have done this conduction band and valence band.
let us rebrush it. Okay, so student, you know that every material is made up of atom. In case of atom, we have nucleus. This is my nucleus. Okay, nucleus consists of protons and neutrons. Surrounding this nucleus, electrons are moving. ये जो अपना न्यूक्लियस है, surrounding to this nucleus, the electrons revolves in a path called as the orbit. The electrons are revolving in a path called as the orbit. You know that in first orbit we have 2 electrons. So this is my orbit number 1. This is my orbit number 2. So this is my orbit number 2. Okay. The last orbit is commonly known as valence orbit. The last orbit is commonly known as valence orbit. This last orbit is known as the valence orbit. Okay. And in this orbit, the electrons are continuously moving. In this orbit, the electrons are continuously moving. Now, when I'm saying the electrons are moving, it means that this electron is having the energy, and we call that as the kinetic energy. We call that energy as a kinetic energy. And everybody knows that the kinetic energy is given by equation half mv square, where m is the mass and v is the velocity. तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस के अराउंड एक पर्टिकुलर सर्कुलर पाथ में मूव होते हैं. उस सर्कुलर पाथ को ऑर्बिट कहते हैं. एंड सिंस these electrons are moving in a circular path, so this electron is having an energy commonly called as the kinetic energy. So now what happens, students? The electrons which are very near to the nucleus, they are tightly attached with their nucleus. And the electrons which are away from the nucleus, they are not tightly attached with the nucleus. Students, you have studied the Coulomb's law. तुम लोगों ने Coulomb's law पढ़ा है. What is Coulomb's law? See, there is a charge Q1. There is a charge Q2. And between these two charges, there is a force. And as per Coulomb's law, the force between the two charges, there can be either an attractive force or there can be a repulsive force. So as per Coulomb's law, the force is directly proportional to product of charge and inversely proportional to distance between them. Okay, let the distance between these two charges is d. So the force is directly proportional to product of charge and inversely proportional to the square of distance between them. इसका मतलब क्या हुआ कि अगर दो चार्ज के बीच में का डिस्टेंस अगर बढ़ते गया तो उन दोनों के बीच में जो फोर्स है, आइदर अट्रैक्टिव फोर्स या रिपल्सिव फोर्स, उसकी वैल्यू कम हो जाएगी. तो स्टूडेंट, ये मेरा एटम है. ये एटम के अंदर न्यूक्लियस है. न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स है जिसका चार्ज पॉजिटिव है, और ये न्यूक्लियस के बाजू में इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व हो रहे इन अ सर्कुलर पाथ कॉल्ड एज अ ऑर्बिट, एंड द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिव. तो होता ये है कि ये न्यूक्लियस के अंदर जो पॉजिटिव प्रोटॉन है और ऑर्बिट में जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है. अभी जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, उनके और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा. सेकेंड ऑर्बिट के बारे में अगर तुम लोग बात कर रहे हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मगर उस फोर्स की वैल्यू कम होगी. अगर लास्ट ऑर्बिट के बारे में वैलेंस, अगर मैं लास्ट ऑर्बिट को मैंने नाम दिया वैलेंस ऑर्बिट, ओके, तो वैलेंस ऑर्बिट के बीच में एंड न्यूक्लियस,
मतलब वैलेंस ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में और न्यूक्लियस, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। ओके, तो स्टूडेंट, तो उससे होगा क्या कि जो इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है उनकी एनर्जी लेवल कम होगी, काइनेटिक एनर्जी लेवल कम होगी, एंड एज यू गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड न्यूक्लियस गोज ऑन डिक्रीजिंग। दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द वैलेंस बैंड उनकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं कि फर्स्ट ऑर्बिट के जो इलेक्ट्रॉन्स है उनमें कितनी एनर्जी है, सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन जो है उसमें कितनी एनर्जी है, थर्ड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन्स है उसमें कितनी एनर्जी है, तो ये जो एनर्जी का वैल्यू है, लेट अस प्लॉट दिस वैल्यू ऑन अ पेपर। तो मैंने क्या किया, एक पेपर लिया और एक पेपर पे मैंने एक वाई एक्सिस ड्रॉ किया। ओके, और इस वाई एक्सिस को मैंने नाम दिया एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, ईवी। अभी अज्यूम करो स्टूडेंट्स, जो फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आई विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन एट 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आई विल ड्रॉ अ लाइन ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जो थर्ड वैलेंस ऑर्बिट है उनकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब वैलेंस ऑर्बिट में जो भी इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो आई विल ड्रॉ अ लाइन एट 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो ये जो डायग्राम बना इसे मैं कहूंगा दिस इज द डायग्राम फॉर एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर वन एटम, एनर्जी बैंड डायग्राम फॉर वन एटम। बट स्टूडेंट, यू नो दैट इन अ गिवन मटेरियल we don't have one atom, we have lakhs of atoms। हमारे पास ढेर सारे एटम्स होते हैं। तो अभी मैं क्या करूंगा, उन ढेर सारे एटम का एनर्जी वैल्यू मैं पेपर पे प्लॉट करता हूं। चलो, दिस इज फॉर एटम नंबर 1। जैसे एटम नंबर 1 है उसके बाजू में एटम नंबर 2 है, तो एटम नंबर 2 का मैंने फर्स्ट ऑर्बिट का एनर्जी लेवल मेजर किया, तो मुझे मालूम पड़ा कि उसकी एनर्जी लेवल 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट नहीं है, 0.9 है, तो मैंने 0.9 पे लाइन ड्रॉ किया। फिर मैंने चेक किया सेकेंड एटम का, सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या है, तो वो है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो मैंने 1.9 पे लाइन ड्रॉ किया। फिर मैंने सेकेंड एटम का ऑर्बिट नंबर 3 वैलेंस ऑर्बिट का एनर्जी चेक किया, तो मुझे मालूम पड़ा उसकी वैल्यू 2.9 है, तो मैंने 2.9 पे लाइन ड्रॉ किया। अभी मैंने क्या किया, एटम नंबर 3 उसका मैंने एनर्जी लेवल मेजर किया, तो एटम नंबर 3 में जो फर्स्ट ऑर्बिट है उसकी एनर्जी है 1.1, तो मैंने 1.1 पे लाइन ड्रॉ किया। फिर एटम नंबर 3 का मैंने सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी लेवल ड्रॉ किया, तो उसकी वैल्यू आई 2.1, तो मैंने 2.1 पे लाइन ड्रॉ किया। सिमिलरली एटम नंबर 3 का वैलेंस ऑर्बिट का मैंने एनर्जी लेवल मेजर किया, तो मुझे वैल्यू आया 3.1, तो मैंने 3.1 पे लाइन ड्रॉ किया। तो ऐसे जब मैं मल्टीपल एटम्स के लिए मेजर करूंगा और जब लाइन ड्रॉ करूंगा, तो आई विल गेट अ थिक लाइन, एंड दिस थिक लाइन इज कॉल्ड एज अ बैंड। दिस थिक लाइन इज कॉल्ड एज अ बैंड। तो जब मैं लाखों एटम के एनर्जी लेवल मेजर करूंगा, तो मुझे एक आई विल गेट अ थिक लाइन्स, ये सब लाइन्स मर्ज होके आई विल गेट अ बैंड, आई विल गेट अ बैंड। ओके, and this diagram is known as energy band diagram for the given material. This diagram is called as energy band diagram for the given material. Okay, and here we can call this as, this energy level indicates the energy level of the first band, this indicates the energy level of second band, and this indicates energy level of the outermost band called as valence band, called as valence band, short form में कहते हैं VB. Okay, and this diagram is known as energy band diagram, which you people have already studied in your lower semester. Okay, now student, वैलेंस बैंड के ऊपर भी और एक बैंड होता है, वैलेंस बैंड के ऊपर भी और एक बैंड होता है, एंड वी कॉल दैट बैंड एज अ कंडक्शन बैंड।
वैलेंस बैंड के ऊपर भी और एक बैंड होता है एंड वी कॉल दैट बैंड एज अ कंडक्शन बैंड. ओके, तो यहां पे है मेरा न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के तुरंत बाद I will have the energy level of all my first orbit, then second orbit, then last outermost orbit called as the valence band. And valence band के ऊपर और एक बैंड होता है, वैलेंस बैंड के ऊपर और एक बैंड होता है और उस बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड. उस बैंड को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड. शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं CB. शॉर्ट फॉर्म में उसे कहते हैं CB. ओके, एंड इट इज द कंडक्शन बैंड हु डिसाइड्स वेदर माय मटेरियल इज कंडक्टर, insulator or semiconductor. The electrons present in the conduction band decides whether my material is a conductor, insulator or semiconductor. So student, in front of you, you have a diagram called as the energy band diagram. Okay, in this energy band diagram, what we show the energy possessed by electrons in the first orbit, second orbit and the last orbit. The last orbit is also known as valence band. Okay, and above the valence band there exists another band called as a conduction band. There exists another band called as a conduction band, and this conduction band decides whether your material is going to be conductor, insulator or a semiconductor. I hope you understood this. Okay, just student, understood this? Any question, any doubt, any query? No, sir. Okay, now based on this particular energy band diagram, now let us define conductor, insulator and semiconductor. So first let us talk about the conductor. Conductor, very simple. It is the material. It is the material which allows electric current to pass through it, which allows electric current to pass through it. Now, why it allows the electric current to pass through it? For example, copper, aluminum, gold, silver, etc. Now, why it allows the electric current to pass through it? Let us see. Now, if you study the energy band diagram for the conducting material, then energy band diagram, energy band diagram for conductor. So in case of conductor, at both 0 degree centigrade and room temperature, at both 0 degree centigrade and room temperature, we have valence band. We have valence band. This is VB, valence band, which is full of electrons. We have valence band which is full of electrons. मतलब उसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, वैलेंस बैंड full of
electron. And also we have conduction band. Also we have conduction band, and this conduction band overlap with my valence band. So this yellow color is conduction band, and conduction band is also full of free electrons. Conduction band also consists of full of free electrons. भले टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेंटीग्रेड होने दो या रूम टेम्परेचर होने दो. ओके, तो हियर यू कैन सी दैट हियर इन दिस रीजन, here in this region, here you can see that in this region, the conduction band and the valence band, they overlap with each other. The conduction band and valence band, they overlap with each other. Okay, so here conduction band, and valence band overlaps with each other, and the conduction band consists of plenty of free electron. Okay, conduction band consists of plenty of free electron. This is the property of this conducting material. तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये कि ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस के साथ टाइटली अटैच नहीं होता है. मैंने तुमको क्या बोला कि न्यूक्लियस और फर्स्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है उनके बीच में टाइट बॉन्डिंग है, मगर सेकेंड ऑर्बिट एंड न्यूक्लियस, मतलब सेकेंड ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन है और न्यूक्लियस, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, मगर उसकी वैल्यू कम हो जाएगी क्योंकि डिस्टेंस बढ़ जाएगा. वैलेंस बैंड में भी जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी अपने न्यूक्लियस के साथ अटैच रहते हैं, मगर कंडक्शन बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके बीच में और न्यूक्लियस के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन 0 होता है. इसका मतलब whatever the electrons which are present in the conduction band, they are not attached with their nucleus, they are free electrons. उनको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहता हूं? उनको मैं फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कहता हूं क्योंकि अगर इस कंडक्टिंग मटेरियल को मैंने बाहर से पोटेंशियल अप्लाई किया तो जो कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तुरंत उस पोटेंशियल के अक्रॉस अट्रैक्ट होके पाथ कंप्लीट करते हैं, और उन इलेक्ट्रॉन के कारण, मतलब कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, उन फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो होता है. तो स्टूडेंट, जो मेरा मटेरियल है कंडक्टर लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, इनका अगर तुम लोगों ने एनर्जी बैंड डायग्राम चेक किया तो तुम्हें मालूम पड़ेगा कि ये जो कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर है, इनमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ ओवरलैप होते हैं, और कंडक्शन बैंड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होने दो या रूम टेम्परेचर होने दो, कंडक्शन बैंड में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और उनमें ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण जब हम इस मटेरियल को बाहर से पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, बाहर से बैटरी अप्लाई करते हैं, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये बैटरी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और फिर बैटरी के थ्रू पाथ कंप्लीट करते हैं, और बैटरी के थ्रू पाथ कंप्लीट करने के बाद फिर क्या होता है? करंट फ्लो होता है. तो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल में, कंडक्शन बैंड में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण कंडक्टिंग मटेरियल करंट कंडक्ट करते हैं. गॉट इट? यस और नो? स्टूडेंट प्लीज रिप्लाई. सर एक और बार जरा बताइए ना. बेग योर पार्डन. तो एक और बार जरा बताइए ना. सी,
conductor is a material which allows electric current to pass through it. Okay, तो किसी भी मटेरियल में से करंट पास होने के लिए, अगर कोई भी मटेरियल है उसमें अगर करंट पास होना है तो उसके लिए क्या चाहिए? तो उसके लिए फ्री इलेक्ट्रॉन चाहिए. व्हाट इज द करंट? इट इज अ मूवमेंट ऑफ चार्ज फ्रॉम वन प्लेस टू द अदर प्लेस. तो करंट कब फ्लो होगा? जब चार्ज होगा. तो जितने भी हमारे कंडक्टिंग मटेरियल है लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर, इन सब कंडक्टिंग मटेरियल में दो बैंड होते हैं, वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड. अगर तुम लोगों ने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे चेक किया या फिर तुम लोगों ने रूम टेम्परेचर पे चेक किया तो वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ये दोनों एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं. वैलेंस बैंड में फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं और कंडक्शन बैंड में भी फुल इलेक्ट्रॉन होते हैं, मगर कंडक्शन बैंड में जो फुल इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या? वो अपने न्यूक्लियस के साथ अटैच नहीं होते हैं. तो हमारे कंडक्टिंग मटेरियल में वैलेंस बैंड एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप करता है और कंडक्शन बैंड में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. और जब हम बाहर से एक्सटर्नल वोल्टेज अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं. और जब ये फ्री इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करते हैं तब हम कहते हैं कि करंट फ्लो होता है. तो कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर ये करंट क्यों कंडक्ट करते हैं? तो कॉपर, एल्यूमिनियम, गोल्ड एंड सिल्वर ये करंट इसलिए कंडक्ट करते हैं कि उनके कंडक्शन बैंड में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए वो करंट कंडक्ट करते हैं. गॉट इट? Yes, sir. प्लीज कॉपी दिस. प्लीज कॉपी दिस. सर एक डाउट था हाँ, प्लीज गो अहेड. सर, ये कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपने बोला कि ओवरलैप होते हैं, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? मतलब हमेशा उनका वो एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है. ओके, थैंक यू सर. Don't finish. Yes, don't finish. Yes, sir. वेट सर. Okay, बेटा. Okay. Shall I proceed now? Okay. Now let us talk about the insulator. Let us talk about the insulator. So what is insulator? It is the material. It is the material which do not allows
the electric current which do not allow the electric current to pass through it. मतलब इंसुलेटिंग मटेरियल करंट को पास नहीं होने देता है. तो इंसुलेटिंग मटेरियल करंट को पास क्यों नहीं होने देता है? लेट अस सी. फॉर एग्जांपल, वुड, प्लास्टिक, माइका, पेपर, एक्सेट्रा. तो ऐसे क्यों? लेट अस स्टडी. अगर इफ यू चेक द एनर्जी बैंड डायग्राम, energy band diagram of insulator. So if you see the energy band diagram of insulator, तो वो कुछ ऐसे है. Here we have valence band which is full of electrons. Okay, this is my VB, valence band full of electrons. इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ओके, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, full of electrons. So I can say full of electrons. Then we have conduction band. But the conduction band is not overlapping with my valence band. Rather, the conduction band is completely empty. This is my conduction band. And this conduction band is completely empty. This conduction band is empty, not having electrons, not having free electrons. And there is a huge gap between the valence band and conduction band. There is a huge gap between the valence band and conduction band, and this gap is known as forbidden energy gap. Forbidden energy gap, which is large. Okay. तो इफ यू सी द एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ इंसुलेटिंग मटेरियल, तो उसमें वैलेंस बैंड है, फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, मगर कंडक्शन बैंड जो है वो वैलेंस बैंड से बहुत दूर है, और कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं. तो जब मैं इंसुलेटिंग मटेरियल लाइक वुड, प्लास्टिक या माइका, इसको जब मैं बाहर से वोल्टेज दूंगा तो करंट फ्लो नहीं होगा. क्यों? क्योंकि करंट फ्लो होने के लिए कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, मगर यहाँ पे कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो करंट फ्लो नहीं होगा. फिर तुम लोग बोलोगे वैलेंस बैंड में तो इलेक्ट्रॉन है. हाँ भाई, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, मगर वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है, वो मूव नहीं हो सकते हैं क्योंकि न्यूक्लियस ने उनको पकड़ के रखा है. और जो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में होते हैं वो फ्री होते हैं, उनको न्यूक्लियस ने पकड़ के नहीं रखा रहता है, इसलिए वो मूव हो सकते हैं. तो इंसुलेटिंग मटेरियल में कंडक्शन बैंड में कंप्लीटली इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं, इसलिए वो करंट कंडक्ट नहीं करते हैं. गॉट इट स्टूडेंट? यस और नो? यस सर. Please. Sir, your voice is lagging.
Sir, your voice breaking. Understood, students? Please tell me understood or not. Sir, can Yes, you sir. repeat? In case of now my voice is proper. Please tell me. Yes, sir. Okay. Insulating, in case of insulating material, we have valence band which is full of electron, and we have conduction band which is completely empty, and there is a huge gap between valence band and conduction band known as forbidden energy gap. So in case of insulating material like wood, plastic, mica and paper, at 0 degree centigrade and also at room temperature, the conduction band is completely empty and not having any free electron. And since my conduction band is completely empty and not having free electron, so even if I apply external voltage, okay, then current will not flow, because to flow the current free electron चाहिए और वो हमारे conduction band में नहीं है. इसीलिए इंसुलेटिंग मटेरियल को अगर हमने प्लास्टिक को या वुड को बाहर से वोल्टेज भी अप्लाई किया तो भी वो करंट कंडक्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसके कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है. फिर तुम लोग बोलोगे वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है. बराबर है, वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन है, मगर वो इलेक्ट्रॉन अपने न्यूक्लियस के साथ अटैच्ड है और न्यूक्लियस उन्हें नहीं छोड़ रहा है, इसलिए वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट नहीं करते हैं. अंडरस्टूड बेटा? Hello. Yes, sir. Please copy this. Okay, so student, this is about the insulator. Now we'll talk about the semiconductor. So when you are talking about the semiconductor, इसका मतलब हम लोगों ने अभी EDC की शुरुआत की. Now we have entered into the EDC. This is very, very important. Semiconductor. What do you mean by semiconductor? So it is a partial conductor. The semiconductor, the property of the semiconductor lies between conductor and insulator. मतलब क्या कि वो करंट कंडक्ट भी करता है और करंट कंडक्ट नहीं भी करता है. तुम बोलोगे इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि at 0 degree centigrade this material behaves like an insulator and do not conduct any current. Semiconductor is a material which possess both the property, insulating property and conducting property. इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये at 0 degree centigrade they behaves like an insulator and do not conduct any current, and at room temperature they behaves like a conductor and conducts some amount of current. I'm using a word some amount of current, means at room temperature they conduct the current but the value of the current is less. So what is a semiconductor? It is a material
it is a material whose property lies between conductor and insulator, whose property lies between conductor and insulator. At 0 degree centigrade, they behaves like a insulator, and at room temperature they behave like conductor and conducts small amount of current Okay, so let us talk about the energy band diagram. In the example, for example, silicon, germanium, gallium, etc. So let us talk about the energy band diagram. Energy band diagram of semiconductor. Energy band diagram of semiconductor. Here we see the energy band diagram of semiconductor. First at 0 degree centigrade. So at 0 degree centigrade, we have valence band, which is full of electron. We have valence band, which is full of electrons. We have valence band, which is full of electron. And we have conduction band. Which is completely empty. At 0 degree centigrade, the conduction band is completely empty. And at 0 degree centigrade, since my conduction band is completely empty, therefore it do not conduct any current. So this is the scenario at 0 degree centigrade. Now what happens at room temperature? At room temperature, what will happen? तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा? टेम्परेचर बढ़ेगा. तो टेम्परेचर बढ़ने के कारण वैलेंस बैंड में जो कुछ इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. तो ये मेरा वैलेंस बैंड है, फिर ये मेरा कंडक्शन बैंड है. ओके, ये मेरा कंडक्शन बैंड है. ओके, और इन दोनों के बीच में जो गैप है उसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. ओके, ये जो गैप है उसे हम कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप. फॉरबिडन एनर्जी गैप. ओके, तो एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड
valence band is full of electron and conduction band is empty. But at room temperature, what is going to happen? At room temperature का मतलब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए. जब हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गए तो जो मेरे वैलेंस बैंड में जो मेरे इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. मतलब क्या होगा, ये जो मेरा वैलेंस बैंड है, ये वैलेंस बैंड में ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स है, तो रूम टेम्परेचर पे ये जो मेरा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी. उनकी एनर्जी बढ़ने के कारण कुछ इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे क्योंकि उनकी एनर्जी बढ़ गई. और फॉरवर्ड एनर्जी गैप जो है वो ज्यादा नहीं है इंसुलेटर जैसा, वो थोड़ा कम है. तो होगा क्या, रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिसके कारण कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे. अभी वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले गए, तो जब इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चला जाता है तो एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहते हैं. एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल कहते हैं. तो उससे होगा क्या, वैलेंस बैंड का इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चला जाएगा तो कंडक्शन बैंड में एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएगा और वैलेंस बैंड में होल क्रिएट हो जाएगा. तो इट विल क्रिएट होल इन द वैलेंस बैंड. Absence of electron is known as hole and the charge of the hole is positive. So at room temperature, what is going to happen? So at room temperature, some of the electron from the valence band, they jump into the conduction band, because of which now there will be free electrons in the conduction band and also there will be free holes in the valence band. Okay. So now this is my free electrons. This is my free electrons in my conduction band. Free electrons. And this is free holes in valence band. Free holes in the valence band. So at room temperature में क्या होगा, कंडक्शन बैंड में थोड़े बहुत फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे एंड वैलेंस बैंड में भी थोड़े बहुत फ्री होल्स आ जाएंगे. और ये फ्री इलेक्ट्रॉन और ये फ्री होल के कारण करंट फ्लो होगा. तो अगर ये मेरा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, सपोज दिस इज माय सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, से दिस इज अ स्लैब ऑफ अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, दिस इज माय सेमीकंडक्टर. उसको अगर मैंने बाहर से वोल्टेज अप्लाई किया, उसको अगर मैंने बाहर से बैटरी अप्लाई की, वोल्टेज अप्लाई किया, उसको अगर मैंने बाहर से वोल्टेज अप्लाई किया, तो ये जो मेरा सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर में ये जो मेरा सेमीकंडक्टर है, ये जो मेरा सेमीकंडक्टर है, इस सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. कंडक्शन बैंड में क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. तो यहाँ पे बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स है. और उसी प्रकार से वैलेंस बैंड में फ्री होल्स है. वैलेंस बैंड में फ्री होल्स है. ओके. तो ये है मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये है मेरे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स. और ये है मेरे फ्री होल्स. तो जब मैं इसको बाहर से वोल्टेज अप्लाई करता हूं तो ये जो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है, वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बैटरी के पॉजिटिव पे अट्रैक्ट हो जाएंगे और जो होल्स है वो बैटरी के नेगेटिव के पास अट्रैक्ट हो जाएंगे. तो इलेक्ट्रॉन भी अपना पाथ कंप्लीट कर लेंगे. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो मटेरियल में से बैटरी के पॉजिटिव के पास जाएंगे, बैटरी के पॉजिटिव में से बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव में से वापस मटेरियल के अंदर, फिर मटेरियल में से फिर से वायर के अंदर,
बाहर का वायर, वायर में से बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव में से बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव में से वायर, वायर में से मटेरियल, ऐसे इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट करेंगे, उससे करंट फ्लो होगा। उसी प्रकार से ये जो होल्स है वो होल्स मटेरियल में से बाहर का वायर, वायर में से बैटरी का नेगेटिव, बैटरी का नेगेटिव में से बैटरी का पॉजिटिव, बैटरी का पॉजिटिव में से वायर, वायर में से फिर मटेरियल, इस प्रकार से होल भी सर्कुलेट करेंगे। एंड इसका मतलब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन भी सर्कुलेट करेंगे, होल भी सर्कुलेट करेंगे। इसका मतलब इन सेमीकंडक्टर मटेरियल, इन सेमीकंडक्टर मटेरियल current flows because of two types of charge carrier, one is the electron and other one is a hole. Okay, अगर इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जा रहा है तो we take the current in the opposite direction, so this will be the direction of my current. Okay, so in case of semiconducting material, in case of semiconducting material like silicon and germanium, at room temperature we have some free electrons in the conduction band and some free holes in the valence band, and because of this free electron and holes current will flow, and such a material is called as a semiconducting material. Sure, understood? Please reply. Yes, sir. So can you repeat that room at room temperature? I got disconnected. Beta, at 0 degree centigrade valence band is full of electron but conduction band is empty. अभी जब रूम टेम्परेचर पे आ जाएंगे, मतलब मैं 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया, तो टेम्परेचर इज ऑल्सो काइंड ऑफ एनर्जी। तो जो मेरा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है सिलिकॉन एंड जर्मेनियम, तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। उसका टेम्परेचर बढ़ गया मतलब उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी। इसका मतलब क्या होगा बेटा कि वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाएंगी। अभी वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी जब बढ़ जाएंगी तो वो लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल पे जंप करेंगे। अभी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में क्या होता है, वैलेंस बैंड कंडक्शन बैंड इनके बीच में जो फॉरवर्ड एनर्जी गैप है वो ज्यादा नहीं है, वो कम है, वो मॉडरेट है, कम है। तो होता क्या है कि जब हमारा सेमीकंडक्टिंग मटेरियल रूम टेम्परेचर पे आता है तो वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन्स है उनकी एनर्जी बढ़ जाती है, जिसके कारण वो जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं। इसके कारण कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं। अभी ये जो कंडक्शन बैंड में जो फ्री इलेक्ट्रॉन आए हैं वो कहाँ से आए हैं, तो वो वैलेंस बैंड में से आए हैं। तो अभी वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन ने जंप कर दिया, तो जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ देता है तो पीछे क्या क्रिएट करता है, होल क्रिएट Holes. करता है। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा बेटा, वैलेंस बैंड में फ्री होल्स क्रिएट हो जाएंगे एंड कंडक्शन बैंड में फ्री इलेक्ट्रॉन्स क्रिएट हो जाएंगे, और इन फ्री इलेक्ट्रॉन एंड फ्री होल के कारण करंट फ्लो होगा। इसलिए हम कहते हैं कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल रूम टेम्परेचर पे करंट कंडक्ट करते हैं। गॉट इट बेटा? Yes, sir. Thank you, sir. प्लीज कॉपी दिस।
Finish? Yes, student, finish? एक सेकंड सर, हो रहा Beg your pardon? है सर, हो रहा है सर. So here you can mention a note in pure semiconductor material, in pure semiconductor material, current flows because of both electrons and holes. सर रूम टेम्परेचर पे वो इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड से सीबी में कब तक जंप करते हैं, मतलब कोई लिमिट होती है उसकी? बेटा जितना तू मतलब लिमिट मतलब कैसा, मीन यू आर टॉकिंग अबाउट द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ना? यस यस। हाँ, तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे बेटा. मतलब फॉर ऐसा एग्जांपल, हो सकता है कि सिर्फ वीबी में सिर्फ होल्स रहे हुए और सीबी में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स रहे हुए? वेरी गुड पॉइंट बेटा. ऐसा हो सकता है, मगर उसके लिए हमको टेम्परेचर को 1000 डिग्री सेंटीग्रेड पे लेके जाना पड़ेगा बेटा. ओके, थैंक यू सर। तब तक वो मेल्ट हो जाएगा. सर सब कभी सीबी से वीबी में जंप नहीं कर सकते कभी इलेक्ट्रॉन्स? नहीं बेटा, सीबी, वेरी गुड क्वेश्चन. सीबी में से इलेक्ट्रॉन बीबी में जंप करेंगे, प्रोवाइडेड दैट दे शुड लूज द एनर्जी. एम आई राइट? यस। तो जब वो एनर्जी लूज करते हैं, ओके, तो वो फेनोमेनन बेटा एलईडी में होता है, लाइट एमिटिंग डायोड्स में. ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी लूज करते तो सम मटेरियल लूज द एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट. तो ये तुम लोग एलईडी देख लो ना बेटा, एलईडी वो सब उसी प्रिंसिपल पे काम करते बेटा. ओके सर। Shall I proceed? Shall I proceed? Sir, does even laser work on that principle? Yes बेटा, बट लेजर में क्या होता है, लेजर में स्टिमुलेटेड एमिशन होता है. Stimulated वाला. या हाँ, तो उसमें क्या होता है, तो लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ बीम. Beam. Okay. Okay. तो Thank एलईडी you, में sir. लाइट गेट स्कैटर्ड, इन लेजर द लाइट कम्स इन द फॉर्म ऑफ अ बीम. Okay, sir. Thank you. वेलकम बेटा. Shall I proceed? Shall I proceed? Am I audible? Yes, sir. Okay, I will proceed now. तो स्टूडेंट, ये जो अपना सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, दिस सेमीकंडक्टिंग मटेरियल, okay, it conducts at room temperature, it conducts the current, but unfortunately the amount of current which it conducts is less, and in our electronic device we require more amount of current. So if you want to increase the value of current, then what we do, we add, in order to increase the conductivity of my pure semiconductor. मैं फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, ये जो हमारा सिलिकॉन, जर्मेनियम और गैलियम है, इसे मैं कहूंगा प्योर सेमीकंडक्टर. इस प्योर सेमीकंडक्टर को टेक्निकल नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ये जो प्योर सेमीकंडक्टर है उसको टेक्निकल नाम है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. अनफॉर्चुनेटली द कंडक्टिविटी, मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कंडक्ट्स द करंट, but the amount of current which they conduct is very less. It is not acceptable to my electronic circuit. So need arises that we should increase the conductivity of intrinsic semiconductor, and to increase the conductivity of intrinsic semiconductor, what we do, we add impurity in it, and the process of adding the impurity in a pure semiconductor is known as doping. Okay, so I'm just mentioning this point
the semiconductor material in its pure form. The semiconductor material in its pure form, in its pure form, मतलब उसमें कुछ भी ऐड नहीं होता है, is known as intrinsic semiconductor, is known as intrinsic semiconductor. Its conductivity is less. Its conductivity is less. Hence to increase its conductivity, hence to increase its conductivity, we add impurity in it. We add impurity in it, and this process is known as doping. This process is known as doping. तो इस प्रोसेस को कहते हैं डोपिंग. तो नॉर्मली स्टूडेंट्स, we add two types of impurity, pentavalent impurity and trivalent impurity. Okay, so normally we add two types of impurity. Normally we add two types of impurity. One, pentavalent impurity having 5 valence electron, pentavalent impurity. Okay, for example, phosphorus. Second, trivalent impurity. Trivalent impurity. For example, indium. Okay, so when we add impurity in the intrinsic semiconductor, तो जो न्यू सेमीकंडक्टर बनता है तो उसे कहते हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर. ओके, तो when we add impurity in intrinsic semiconductor, S/C मतलब semiconductor, S-C मतलब semiconductor. So when we add impurity in intrinsic semiconductor, then it gets converted into extrinsic semiconductor. Then it get converted into extrinsic semiconductor. Okay, तो extrinsic semiconductor दो टाइप के होते हैं. extrinsic semiconductor दो टाइप के होते हैं. N type and P type. N type and P type.
Okay, so when you add pentavalent impurity, when we add pentavalent impurity, तो we get n type. तो जब pentavalent impurity add करते हैं तो we get n type. और जब हम ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो वी गेट पी टाइप. जब ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो वी गेट पी टाइप. तो स्टूडेंट, whenever we add impurity in an intrinsic semiconductor, then we get a new semiconductor known as extrinsic. Extrinsic semiconductor के दो टाइप है, n type and p type. तो when you add pentavalent impurity, then when we add pentavalent impurity, तो हमें एक नया सेमीकंडक्टर मिलता है जिसे हम एन टाइप कहते हैं. एंड व्हेन वी ऐड पी टाइप इंप्योरिटी तो हमें एक नया सेमीकंडक्टर मिलता है जिसे हम ट्राइवैलेंट कहते हैं. तो प्लीज कॉपी दिस, देन विल गो फॉर द एन टाइप एंड पी टाइप, एंड देन विल गो फॉर द पीएन जंक्शन, दैट इज अ डायोड. स्टूडेंट, कॉपी दिस. Just one finish. Just one finish or not? No, sir, not yet. Almost done. Done. Okay. Now we'll study the energy band diagram for both n type and p type. Okay. So now we'll study the energy band diagram for n type. Structure energy band diagram for n type. Structure and energy band diagram for
N-type semiconductor. Okay. Now, when we add pentavalent impurity, in pure semiconductor, then what happens? Then a new energy level is created. New energy level having free electrons. New energy level having plenty of free electron, is created near the conduction band. Okay, तो देखो स्टूडेंट, at 0 degree centigrade, if you draw the energy band diagram, तो ये है तुम्हारा वैलेंस बैंड, which is full of electrons. Then we have conduction band. Which is empty at 0 degree centigrade, empty. And now a new energy level is created. Near the conduction band. Okay, having plenty of free electrons. ये जो new energy level है, it is having plenty of free electrons. So this is new energy level created because of impurity. New energy level created because of impurity. Okay, and this is the scenario at 0 degree centigrade. Now what happens at room temperature? Now this is something important. At room temperature, what happens? तो जितने भी हमारे मतलब, now this is my conduction band. Okay, this is my valence band. Okay, and this is my new energy level. Okay, तो अभी होगा क्या, रूम टेम्परेचर पे क्या होगा कि जितने भी न्यू एनर्जी लेवल पे जो भी इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब ये जो न्यू एनर्जी लेवल है, ये न्यू एनर्जी लेवल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है, तो वो जो सबके सब इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में जंप कर जाएंगे. ऑल दिस इलेक्ट्रॉन्स which are present in the new energy level, they will jump into the conduction band, and now
plenty of free electrons are available in the conduction band. मतलब अगर मैंने 1,00,000 impurity atom ऐड कर दिए तो न्यू एनर्जी लेवल में 1,00,000 एक एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। तो अगर मैंने सिलिकॉन के अंदर 1,00,000 फास्फोरस एटम ऐड किए तो वो 1,00,000 फास्फोरस एटम 1,00,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स देंगे। एंड एट रूम टेम्परेचर ये 1,00,000 फ्री इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिससे कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ जाएगी। और कंडक्शन बैंड में जब ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो दे विल कंडक्ट द करंट फॉर मी, दे विल कंडक्ट द करंट फॉर मी। ओके, तो देखो स्टूडेंट, एट रूम टेम्परेचर दो चीजें हो रहे। रूम टेम्परेचर पे न्यू एनर्जी लेवल जो है, न्यू एनर्जी लेवल में जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो सबके सब कंडक्शन बैंड में जम करके चले जाएंगे। साथ में वैलेंस बैंड में भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, साथ में वैलेंस बैंड में भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स है। तो वैलेंस बैंड के अंदर के भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस बैंड के अंदर के भी मैं अलग कलर यूज करता हूं ये जंपिंग दिखाने के लिए। तो ये जो वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन्स है वो भी जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। वैलेंस बैंड के कुछ इलेक्ट्रॉन जो है वो भी जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। ओके, तो होगा क्या कि यहाँ पे न्यू एनर्जी लेवल से भी इलेक्ट्रॉन आ गए और थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से भी आ गए। तो जो थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से आए हैं उसके कारण ये जो मेरा वैलेंस बैंड है उसमें थोड़े बहुत होल्स क्रिएट हो जाएंगे। ओके, तो होगा क्या स्टूडेंट, एट रूम टेम्परेचर जो न्यू एनर्जी लेवल में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन थे वो भी जम कर जाएंगे और वो कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। और थोड़े बहुत मतलब 25-50 इलेक्ट्रॉन, मतलब न्यू एनर्जी लेवल में से अगर 1,00,000 इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में जा रहे तो वैलेंस बैंड में से 25 से 50 इलेक्ट्रॉन जम करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे, जिसके कारण वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाएंगे। तो ये हुआ एनर्जी बैंड डायग्राम। अगर मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, now if you draw the structure, if you're talking about the structure of my n-type semiconductor, तो इस n-type semiconductor में क्या हो रहा है कि हमने फास्फोरस एटम ऐड किया। तो मैंने 1,00,000 फास्फोरस एटम ऐड किए। अब ये फास्फोरस मुझे इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन देता है या लेता है तो वो आयन बन जाता है। Whenever an atom gives the electron or takes the electron, then it becomes the ion. तो यहाँ पे फास्फोरस इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो आयन बन जाएगा, और जो इलेक्ट्रॉन देता है वो पॉजिटिव आयन बन जाएगा। तो इस केस में अगर तुम लोगों ने स्ट्रक्चर कंसिडर किया तो स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे आएगा? द स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर, स्ट्रक्चर ऑफ एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे आएगा? तो कंसीडर करो ये मेरा एन टाइप सेमीकंडक्टर है। ओके, तो इसमें क्या आएंगे? फास्फोरस ऐड किया ना, और फास्फोरस क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन दे रहा है। तो वो फास्फोरस बन जाएगा पॉजिटिव आयन। वो फास्फोरस मेरे लिए बन जाएगा पॉजिटिव आयन। दिस फास्फोरस विल बिकम अ पॉजिटिव आयन फॉर मी। तो फास्फोरस इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो वो बन जाएगा पॉजिटिव आयन, एंड ईच पॉजिटिव आयन is giving me one free electron. Each positive ion is giving me one free electron, and the current will flow because of this free electron, and current flows because of electron. Okay, and the charge of electron is negative, hence it is known as n type, मतलब negative type semiconductor. तो स्टूडेंट देखो, इसको एन टाइप का फुल फॉर्म है नेगेटिव टाइप। इसको नेगेटिव टाइप क्यों कहते हैं? उसको नेगेटिव टाइप इसलिए कहते हैं
कि इसमें हम पेंटावलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। पेंटावलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद जो भी इंप्यूरिटी एटम है वो हर एक एटम मुझे फ्री इलेक्ट्रॉन देता है और उसके कारण वो आयन बन जाता है। तो पेंटावलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद कंडक्शन बैंड में ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो जब हम बाहर से वोल्टेज अप्लाई करेंगे तो करंट फ्लो होगा, किसके कारण? तो फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण। फ्री इलेक्ट्रॉन के कारण करंट फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव है, इसलिए इस सेमीकंडक्टर को नेगेटिव टाइप सेमीकंडक्टर या फिर एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। गॉट इट? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. अब एक बात ध्यान में रखना स्टूडेंट्स, इसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन है, साथ में देखो वैलेंस बैंड में थोड़े बहुत होल्स भी है। ओके, तो क्या यू कैन सी हियर वी विल हैव फ्यू होल्स आल्सो, वी विल हैव फ्यू होल्स आल्सो। ओके, तो if you are talking about the structure of n type semiconductor, so it consists of positive ion and plenty of free electrons known as structure of n type semiconductor. Okay, so it consists of positive ion, it consists of positive ions, and each ion gives one free electron, and these electron known as majority charge carrier. These electrons known as majority charge carriers. Okay, so in n type semiconductor, okay, the electrons are major in number, so these are known as majority charge carrier. But due to temperature agitation, few electrons jumps from valence band to conduction band, producing holes in the valence band, and these holes are known as minority charge carrier. These holes are known as minority charge carrier. ओके, तो स्टूडेंट एन टाइप सेमीकंडक्टर में पॉजिटिव आयन होता है और हर एक पॉजिटिव आयन एक फ्री इलेक्ट्रॉन देता है। तो ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इन ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को हम लोग मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कहते हैं। मगर टेम्परेचर इंक्रीज होने के कारण वैलेंस बैंड में से थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन हमारे कंडक्शन बैंड में जंप करते हैं, जिसके कारण वैलेंस बैंड में थोड़े बहुत होल्स आते हैं और इन होल्स को हम कहते हैं माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। ये ध्यान में रखना, क्योंकि आगे जाके वी विल बी डूइंग अ कांसेप्ट ऑफ लीकेज करंट। तो लीकेज करंट के कांसेप्ट के समय ये माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर गोइंग टू बी इंपॉर्टेंट। गॉट इट स्टूडेंट? यस और नो? Yes, sir. Please copy this. Please copy this.
Student finish? No. Please make it fast. सर रूम टेम्परेचर पे कभी न्यू एनर्जी लेवल एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप कर सकते हैं? हाँ, अगर हम लोगों ने बहुत ज्यादा डोपिंग किया, ओके, तो फिर वो रूम टेम्परेचर पे ओवरलैप कर सकते हैं। एंड न्यू एनर्जी लेवल से इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बॉन्ड में जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। वैलेंस बैंड में नहीं, कंडक्शन बैंड में। वैलेंस बैंड में क्यों नहीं जा सकते हैं? क्योंकि हम लोगों ने पेंटावलेंट इंप्योरिटी ऐड किया ना, तो पेंटावलेंट इंप्योरिटी का मतलब हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया, तो इलेक्ट्रॉन ऐड किया तो नई एनर्जी लेवल बढ़ जाएगी ना, तो एनर्जी लेवल बढ़ गई तो वो कंडक्शन बैंड की तरफ जाएगी। तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी लेवल बढ़ती है, ओके, तो जब इलेक्ट्रॉन ऐड करूंगा तो एनर्जी लेवल बढ़ेगी। सर, तो मतलब हाँ, सर मतलब एन टाइप एक डोनर हुआ ना थोड़ा। हाँ, तो सर ये जो मैंने एन टाइप में हम डोनर इंप्योरिटी ऐड करते हैं ना, फॉस्फोरस इज डोनर क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। सर और एक डाउट था, मतलब बेसिक डाउट था, मतलब मेरे को थोड़ा कंफ्यूजन है। आपने जैसे बोला कि एक पॉजिटिव आयन गिव्स वन फ्री इलेक्ट्रॉन, मतलब वो हमेशा वन ही देता है या डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन टू भी नहीं दे नहीं, सकता है? देख, फॉस्फोरस की वैलेंसी कितनी है? 5। सिलिकॉन की वैलेंसी कितनी है? 4। तो जब मैं फॉस्फोरस और सिलिकॉन को कंबाइन करूंगा तो फॉस्फोरस के 5 में से 4 इलेक्ट्रॉन सिलिकॉन के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो फिर बचेगा कौन? एक इलेक्ट्रॉन। उसको कॉम्बिनेशन के लिए कोई कोवैलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए कोई इलेक्ट्रॉन मिला नहीं, बराबर है? तो इसका मतलब जब मैं एक एटम ऐड करूंगा तो फॉस्फोरस मुझे एक फ्री इलेक्ट्रॉन देगा। समझा सर, थैंक यू सर। Sir, हाँ, how is new energy level created? न्यू एनर्जी लेवल इज क्रिएटेड बिकॉज कि पहले सिर्फ सिलिकॉन थे, तो सिलिकॉन में वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड था, बराबर है? अभी मैंने उसके अंदर फॉस्फोरस ऐड किया, तो जब मैंने उसके अंदर फॉस्फोरस ऐड किया तो हर एक फॉस्फोरस एटम ने मुझे एक फ्री इलेक्ट्रॉन दिया, बराबर है? तो अभी ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अभी फ्री इलेक्ट्रॉन होने के कारण, और देखो मैंने क्या बोला, फ्री इलेक्ट्रॉन मतलब वो न्यूक्लियस के नजदीक नहीं होंगे, मतलब वो वैलेंस बैंड के नजदीक नहीं होंगे, तो वो कहां पे होंगे? कंडक्शन बैंड के नजदीक होंगे। तो ये फॉस्फोरस एटम ऐड करने के कारण हर एक फॉस्फोरस एटम एक फ्री इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसके कारण न्यू एनर्जी लेवल क्रिएट हो गए बेटा। Okay, गॉट sir. इट? हेलो? Yes, sir. Sir, तो फिर ये हाँ, न्यू एनर्जी लेवल क्रिएट ना होके डायरेक्ट वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्शन बैंड में नहीं जाते? नहीं, तो वैसा नहीं हो सकता है बेटा, क्योंकि सिलिकॉन का वैलेंसी 4 है एंड फॉस्फोरस का वैलेंसी 5 है। डायरेक्टली कंडक्शन बैंड में अगर तुझे इलेक्ट्रॉन को पुटअप करना है तो उनकी वैलेंसी सेम होनी चाहिए ना। Okay, sir. Thank you. बरोबर, तर माझं ऍट द वर्क सतेंद्र हेलो। ओके, तो दिस इज अबाउट द n type. Now let us talk about the p type. So we'll now talk about structure and energy band diagram for the p type. Structure and energy diagram of
पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम डोनर इंप्यूरिटी ऐड करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर में हम एक्सेप्टर इंप्यूरिटी ऐड करते हैं। ओके, तो when we add trivalent impurity, in a pure semiconductor, then a new energy level is created near the valence band, having plenty of free holes. ओके, तो देखो स्टूडेंट, अभी एनर्जी बैंड डायग्राम एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड अगर तुम लोगों ने देखा तो ये है मेरा वैलेंस बैंड, ये है मेरा वैलेंस बैंड जिसमें ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स है। ये है मेरा कंडक्शन बैंड जो कंप्लीटली एम्प्टी है। ये है कंडक्शन बैंड जो कंप्लीटली एम्प्टी है। और अभी क्या होगा, नाउ अ न्यू एनर्जी लेवल इज क्रिएटेड, नाउ a new energy level is created near the valence band having the free holes. A new energy level is created near the valence band having the free holes. ओके, तो इसमें देखो ढेर सारे फ्री होल्स है। कंडक्शन बैंड एम्प्टी है, वैलेंस बैंड फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस बैंड इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। दिस इज फुल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, so this is the scenario, this is my new energy level, new energy level. Okay, so this is the scenario at 0 degree centigrade. Now what happens at room temperature? At room temperature, what is going to happen? तो रूम टेम्परेचर पे अभी क्या होगा, तो रूम टेम्परेचर पे ये है मेरा वैलेंस बैंड, ये है मेरा कंडक्शन बैंड, दिस इज CB। अभी होगा क्या, ये है मेरा न्यू एनर्जी लेवल, दिस इज माय न्यू एनर्जी लेवल जिसके अंदर होल्स है, जिसके अंदर होल्स है। और ये है मेरे इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस बैंड, these are my electrons in the valence band. तो अभी होगा क्या, एट रूम टेम्परेचर जो वैलेंस बैंड के अंदर इलेक्ट्रॉन्स है वो जंप करके इस होल को न्यूट्रलाइज कर देंगे। वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन जंप करके
ये न्यू एनर्जी लेवल को, ये न्यू एनर्जी की लेवल के होल के साथ कंबाइन हो जाएंगे और एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देंगे। उसके कारण क्या होगा, उसके कारण यहाँ पे वैलेंस बैंड में होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और स्टूडेंट, मैंने तुमको पहले क्या बोला था कि अगर मुझे करंट कंडक्ट करना है तो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, नहीं तो वैलेंस बैंड में होल्स होने चाहिए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है स्टूडेंट्स कि जो न्यू एनर्जी लेवल क्रिएट हुई है वो वैलेंस बैंड के नजदीक है, उसमें ढेर सारे होल्स है, तो रूम टेम्परेचर पे वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन्स जंप करके न्यू एनर्जी लेवल पे जाएंगे, वहां के होल के साथ कंबाइन करके उसे न्यूट्रलाइज करेंगे, मगर उसके कारण वैलेंस बैंड में अभी एक्स्ट्रा फ्री होल्स क्रिएट हो जाएंगे। और अभी जो करंट फ्लो होगा वो फ्री होल के कारण फ्लो होगा, वो फ्री होल के कारण होगा। ओके, एंड द करंट फ्लोज बिकॉज ऑफ द होल्स एंड द चार्ज ऑफ द होल इज पॉजिटिव, हेंस दिस सेमीकंडक्टर इज नोन एज पॉजिटिव टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। ओके, इसके अलावा क्या होगा स्टूडेंट्स, इसके अलावा जैसे मैंने तुमको एन टाइप में बताया था, यहाँ पे भी क्या होगा कि ये जो वैलेंस बैंड है वो वैलेंस बैंड में से कुछ इलेक्ट्रॉन जंप करके थोड़े बहुत इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाएंगे। तो कंडक्शन बैंड में बहुत थोड़े सारे इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, तो इसमें देखो स्टूडेंट, जब मैं ट्राइवेलेंट इंप्यूरिटी ऐड करता हूं, मतलब मैं एक्सेप्टर इंप्यूरिटी ऐड करता हूं, तो वो इलेक्ट्रॉन देता नहीं है, वो उल्टा वैलेंस बैंड में से इलेक्ट्रॉन ले रहा है। तो अभी ये जो इंप्यूरिटी है इंडियम, वो इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। तो जब वो इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो नेगेटिव आयन बन जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें हमें पॉजिटिव आयन नहीं मिलेंगे, इसमें हमें नेगेटिव आयन मिलेंगे, और हर एक नेगेटिव आयन मुझे एक फ्री होल देगा। इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द पी टाइप सेमीकंडक्टर, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर के बारे में अगर तुम लोग बात कर रहे हो, स्ट्रक्चर ऑफ पी टाइप, तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में पी टाइप सेमीकंडक्टर में वी विल हैव प्लेंटी ऑफ नेगेटिव आयंस, क्योंकि यहाँ पे जो मेरा इंप्यूरिटी है वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम, इलेक्ट्रॉन देने का काम नहीं कर रहा है, वो इलेक्ट्रॉन लेने का काम कर रहा है। तो वी विल बी हैविंग प्लेंटी ऑफ फ्री नेगेटिव आयन, and every negative ion is giving me free hole, and the current will flow because of this free hole, and the charge of the hole is positive, hence it is known as p type or positive type electron, p type or positive type semiconductor। बट यहाँ पे अगर देखा तुम लोग स्टूडेंट्स कि ढेर सारे होल के साथ साथ एक आध दूसरा इलेक्ट्रॉन भी होगा, एंड दीज इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। If you're talking about the structure of the p-type semiconductor, then it consists of negative ion. It consists of negative ion, and each ion gives one free electron, one free hole in the valence band, and these holes are known as majority charge carrier. Due to temperature agitation,
due to temperature agitation, few electrons are also produced in conduction band, are also produced in conduction band. These electrons in p-type semiconductor are known as minority charge carrier. Minority charge carrier. Student, got it? Yes, student, please reply. Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. Please copy this. Okay, students. So I hope you are finished. So I hope everybody has thoroughly understood
the meaning of p-type semiconductor, n-type semiconductor? Yes or no, students? Yes, sir. Yes. Okay, now we can start with the p-n junction, which is nothing but my diode. So first we'll study the formation of p-n junction, then we'll talk about the biasing of p-n junction. Okay, so let us start with the p-n junction. p-n junction. So student, when you combine the p-type semiconductor with the n-type semiconductor, then it forms a p-n junction. So this is my p-n junction. So student, this is my p-type semiconductor. This is my n-type semiconductor. The p-type semiconductor consists of negative ion, and every negative ion gives me a hole. So this is negative ion, holes, negative ions and holes. Now, n-type consists of positive ion, and every positive ion gives me a free electron. Every positive ion gives me a free electron. So by using fabrication process, I will combine my p-type with the n-type. Using fabrication process, I will combine the p-type with n-type. So student, what we do using a fabrication process, we combine p-type with the n-type. The p-type consists of negative ion, and every negative ion gives me a hole, and the n-type consists of positive ion, and every positive ion gives me a free electron. So what happens student, when you combine p-type with the n-type, तो एक साइड पे ढेर सारे होल्स आ जाएंगे, एक साइड पे ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे, एक साइड पे पॉजिटिव वैल्यू आ जाएगा, एक साइड पे नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा. So there is a charge gradient. There is a charge gradient. मतलब एक साइड पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है और एक साइड पे नेगेटिव चार्ज है, तो चार्ज ग्रेडियंट इज क्रिएटेड. Okay, so what happens? Because of this, the free electron from n-type migrates into p-type, combines with the hole and nullify each other. मतलब ये जो n-type में फ्री इलेक्ट्रॉन है वो जंक्शन क्रॉस करेगा और यहाँ पे होल के साथ कंबाइन करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन करेगा तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन होल को नलीफाई कर देगा. अगर ये इलेक्ट्रॉन होल को नलीफाई कर देगा तो होगा क्या, यहां से इलेक्ट्रॉन और होल निकल जाएंगे. मतलब ये यहां से होल निकल गया, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल गया. ओके, तो इस प्रोसेस को कहते हैं डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स एट द जंक्शन. दिस प्रोसीजर इज नोन एज डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स एट द जंक्शन. अभी इस प्रक्रिया में क्या हुआ, इस प्रक्रिया में मेरे एन टाइप ने इलेक्ट्रॉन दिया और मेरे पी टाइप ने इलेक्ट्रॉन लिया. तो इस प्रक्रिया में एन टाइप इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पी टाइप इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उससे क्या होगा, एन टाइप को पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी और पी टाइप को नेगेटिव वैल्यू मिलेगी. ओके, अभी क्या होगा, अभी दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, एन टाइप में से माइग्रेट करेगा, पी टाइप में घुस जाएगा, इलेक्ट्रॉन के साथ कंबाइन करेगा, और जब ये इलेक्ट्रॉन होल के साथ कंबाइन हो जाएगा तो इलेक्ट्रॉन होल को नलीफाई कर देगा. ओके, जब अभी इलेक्ट्रॉन होल को नलीफाई कर दिया तो इन दोनों का इफेक्ट देखो, नलीफाई हो गया, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां से होल निकल जाएगा. होगा क्या, तो एन टाइप में एक पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया, पी टाइप में एक नेगेटिव आयन क्रिएट हो गया. देखो यहाँ पे भी ये पॉजिटिव आयन क्रिएट हो गया,
इधर नेगेटिव आयन क्रिएट हो गया, इसका होल चला गया, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, यहाँ पे भी पॉजिटिव आयन और यहाँ पे नेगेटिव आयन, इसका इलेक्ट्रॉन चला गया, इसका होल चला गया। अभी देखो एन टाइप ने क्या किया, एन टाइप ने दूसरी बार इलेक्ट्रॉन दिया, पी टाइप ने दूसरी बार इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, तो एन टाइप पे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, पी टाइप पे नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। ओके, तो प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन विल कंटिन्यू, the process of diffusion will continue, another electron will travel, it will combine, it will go into p type, combine with the whole, nullify each other effect. Okay, so if it nullifies each other if it nullifies the each other effect, okay, तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, यहां से होल निकल जाएगा, यहाँ पे पॉजिटिव आयन क्रिएट हो जाएगा, पी टाइप में नेगेटिव आयन क्रिएट हो जाएगा, फिर से क्या होगा, फिर से एन टाइप पे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, फिर से एन टाइप पे पॉजिटिव वैल्यू बढ़ जाएगी, पी टाइप पे नेगेटिव वैल्यू बढ़ जाएगी। तो प्रोसेस विल रिपीट, द प्रोसेस विल रिपीट, ओके, एंड साइमल्टेनियसली द पॉजिटिव वैल्यू ऑन द एन टाइप विल इंक्रीज and negative value on p type will increase. Now a stage will come such that the positive value on n type is strong enough to repel the holes coming from the p type, and the negative value on the p type is strong enough to repel the electrons which are coming from n type, because of which now the process of diffusion of electron and hole at the junction will stop. मतलब n टाइप इलेक्ट्रॉन दे रहा था, p टाइप इलेक्ट्रॉन ले रहा था, n टाइप से इलेक्ट्रॉन p टाइप में जा रहे थे, एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे थे, इसी प्रक्रिया को हम डिफ्यूजन कहते थे। ये डिफ्यूजन के कारण एन टाइप में पॉजिटिव आयन क्रिएट हो रहा था, जिसके कारण एन टाइप की वैल्यू पॉजिटिव बन रही थी। इस डिफ्यूजन के कारण पी टाइप में नेगेटिव आयन क्रिएट हो रहा था, जिसके कारण पी टाइप पे नेगेटिव वैल्यू आ रही थी। अभी क्या होगा, अभी ये जो डिफ्यूजन की प्रक्रिया है ये बंद हो जाएगी। क्यों बंद हो जाएगी? क्योंकि एन टाइप पे पॉजिटिव वैल्यू इस कदर बढ़ जाएगी कि वो पी टाइप से आने वाले होल को रिपेल कर देगी। पी टाइप पे नेगेटिव वैल्यू इस कदर बढ़ जाएगी कि वो एन टाइप से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर देगी। मैं कहने का मतलब ये है कि डिफ्यूजन प्रोसेस, द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल at the junction will stop, and now a barrier is created. Now a barrier is created, and this barrier will not allow, यहाँ पे अभी एक wall create होगी, एक barrier create होगी। Now a barrier is created, and this barrier will not allow the further diffusion of electron and hole at the junction। अभी यहाँ पे एक बैरियर क्रिएट हो गई है, और ये जो बैरियर है, ये जो मैंने येलो कलर से ड्रॉ किया है, ये बैरियर क्रिएट हो गई है, एंड दिस बैरियर विल नॉट अलाउ द फर्दर डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल एट द जंक्शन, एंड दिस बैरियर is commonly known as depletion region. This barrier is commonly known as depletion region. Okay, why it is known as depletion region? क्योंकि अगर तुम लोगों ने ये जो येलो शेडेड पोर्शन के अंदर का एरिया देखा, तो ये येलो शेडेड पोर्शन के अंदर जो एरिया है, इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस है, एंड यू पीपल नो दैट आयंस आर इमोबाइल, आयंस मूव नहीं हो सकते हैं। तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, इन दिस डिप्लीशन रीजन वी हैव ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव इमोबाइल आयंस। वी हैव ओनली पॉजिटिव एंड नेगेटिव immobile ions, and we do not have free electron or free hole, and we do not have free electron or free hole. Since this region is depleted,
of free moving charges. Depleted मतलब नहीं होना, डिप्लीटेड मतलब नहीं होना. तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर फ्री मूविंग चार्जेस नहीं होते हैं, उसमें फ्री मूविंग चार्जेस नहीं होते हैं, इसीलिए उसे डिप्लीशन रीजन कहते हैं. तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर क्या है? तो ये डिप्लीशन रीजन के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है. ये जो डिप्लीशन रीजन है, इस डिप्लीशन रीजन के अंदर पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयन है. स्टूडेंट, तुम लोगों ने फिजिक्स में पढ़ा होगा, पॉजिटिव चार्ज produces the electric lines of flux in the outward direction and negative charge is having the electric lines of force in the inward direction. Am I right? तो ये जो डिप्लीशन रीजन है, इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस है. तो बिटवीन दिस पॉजिटिव नेगेटिव आयन there will be a transfer of electric lines of force. There will be transfer of electric lines of force, and because of the transfer of electric lines of force, there will be a electric field in it. There will be electric field in it, and because of this electric field, it creates the potential known as barrier potential. Because of this electric field, it creates the potential known as barrier potential. If this PN junction is made up of silicon, then the barrier potential value is 0.7 volt. If this PN junction is made up of germanium, then the value of the barrier potential is 0.3 volt. So student, whatever I have shown with the help of this red color, this is nothing but the electric field. Electric field. Okay. Okay, so this is the electric field, and because of this electric field, the barrier potential is created. Because of this electric field, the barrier potential is created. Okay, for silicon PN junction, the value of barrier potential is 0.7 volt, and for germanium, it is 0.3 volt, and this is known as PN junction. तो पीएन जंक्शन में स्टूडेंट देखा तुम लोगों ने, एक साइड पे पी टाइप है, दूसरे साइड पे एन टाइप है, एंड सेंटर रीजन में अभी क्या फॉर्म हुआ? डिप्लीशन रीजन. ओके, एंड दिस डिप्लीशन रीजन इज कंसिस्टिंग ऑफ, ऑन एन साइड इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन, ऑन एन साइड, यहाँ पे देखो एन साइड इट कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव आयन, एंड एट द पी साइड इट कंसिस्ट ऑफ नेगेटिव आयन, एंड देयर इज अ transfer of electric lines of force from N to P type, because of which electric field is created, and because of this electric field a barrier potential is created. Okay, so here you can see that when we combine P type semiconductor with N type semiconductor, then at the junction a depletion region is created. At the junction a depletion region is created. The depletion region do not have free moving electrons or holes, but it consists of positive ion towards N side and
negative ion towards P side. Because of this, because of positive and negative ions in the depletion region, electric field is produced. Electric field is produced, which in turn produces potential inside the depletion region, known as barrier potential. Denoted as VBI. Full stop. If PN junction is made up of silicon material, then VBI is equal to 0.7 volt. If PN junction is made up of germanium, then VBI is equal to 0.3 volt. Got it, students? Understood the formation of PN junction? Yes, sir. Please copy this.
Student finish? Yes, student finish or not? Yes, sir. Okay. Yes. तो स्टूडेंट ये जो बैरियर पोटेंशियल है, दिस बैरियर पोटेंशियल इज गिवन बाय इक्वेशन. The barrier potential inside the depletion region, is given as VBI. This equation is VBI is equal to VT log to the base C of Na into Nd upon Ni square, where VBI is my barrier potential. VBI is my barrier potential. Na is number of acceptor ions in p type. Nd number of donor ions in n type. Ni is known as intrinsic carrier concentration. Intrinsic carrier concentration. मतलब it indicates the number of silicon atom. Intrinsic carrier concentration. It indicates the number of silicon atoms. And Vt is equal to K into T upon Q is thermal voltage. Where K is my Boltzmann constant. Boltzmann constant. T is temperature in Kelvin. And Q is charge. Okay, at room temperature, if you calculate the value of Vt at room temperature, the thermally generated voltage Vt value is 26 millivolt. The value of Vt is 26 millivolt. So this is for the reference students. The barrier, इसका derivation हमको नहीं है, but you should know the equation. Okay, the barrier potential is given by formula Vt is equal to log to the base C of in the bracket Na into Nd upon Ni square, where VBI is my barrier potential. Na मतलब कितने acceptor ions है, Nd मतलब कितने donor ions है n type में, Ni मतलब मेरे सिलिकॉन के कितने ions है, atoms है. Vt को कहते हैं thermally generated voltage. उसका फॉर्मूला है Vt is equal to K into T upon Q. K is the Boltzmann constant, T is the temperature in Kelvin, and Q is the charge of electron, okay, which is in 1.6 into 10 raised to minus 9 coulomb. So at room temperature, we will take the value of Vt as 26 millivolt. Okay, copy this, students. सर 0 डिग्री सेल्सियस में Vt कितना होता है? Beg your pardon, बेटा.
0 डिग्री सेल्सियस में VT का वैल्यू मिलीवोल्ट्स में कितना होएगा? ऑलमोस्ट 0 ही आएगा बेटा। ओके क्या होता है ना कि जब जब किसी भी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ जाता है तो एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है। एक्स्ट्रा एनर्जी के कारण उसके अंदर की चार्ज कैरियर्स मूव करते हैं। तो वो जो चार्ज कैरियर्स मूव कर रहे हैं उस फेनोमेनन को हम पोटेंशियल से दिखाते हैं और उस पोटेंशियल को हम थर्मली जनरेटेड पोटेंशियल कहते हैं। गॉट इट बेटा? It Yes. normally happens in metals and conducting materials. It don't happens in insulators. ओके सर। Got it, students? Any doubt? No, sir. So this is all about the today's lecture. So any question, any doubts? I'm there to answer it. I hope you understood today's lecture. Next lecture हम लोग PN junction का biasing करेंगे and then we'll do the working of BJT and JFET and then immediately we'll start with the circuits of BJT and JFET. So what is this module's name? In module number 1 we will be studying PN junction मतलब diode. Okay, I will tell you, just give me, I have the syllabus copy, just wait. The module number 1 name is module number So 1. this was module number 1, not for the lesson which we studied today. Yeah, this is module number 1. The name of the module number 1 is the introduction to electronic devices. तो उसमें हम लोगों ने 1.1 में we are supposed to do study of PN junction diode characteristics and diode current equation, application of Zener diode as a voltage regulator, then construction, working and characteristics of BJT, JFET and E type MOSFET. तो उसमें से अभी हमारा मतलब आज इंट्रोडक्शन हो गया एंड PN जंक्शन का फॉर्मेशन हो गया। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग PN जंक्शन का बायसिंग करेंगे, डायोड का कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे एंड विल बी आल्सो डूइंग द वर्किंग ऑफ BJT एंड JFET एंड उसका कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सर्किट्स ऑफ BJT एंड JFET। और जब मैं MOSFET का सर्किट स्टार्ट करूंगा तब मैं तुमको MOSFET का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सिखाऊंगा, क्योंकि अभी मैंने MOSFET का कंस्ट्रक्शन वर्किंग सिखाया और उसके बाद 2-3 चैप्टर के बाद जब MOSFET का सर्किट आएगा तो तुमको समझ में दिक्कत आ जाएगा। तो नेक्स्ट लेक्चर में आई विल ट्राई टू फिनिश द मॉड्यूल नंबर 1 तो फिनिश हो ही जाएगा एंड वी मे स्टार्ट विद द मॉड्यूल नंबर 2 आल्सो। विल जस्ट बिगिन विद द मॉड्यूल नंबर 2। ओके Sir, is there any numerical in module number 1? Beta, in module number 1 there is no numerical, but in module number 2, module number 3, module number 4, okay, and module number 6, module number 2, 3, 4, 6 is full of numerical. Module number 1 is introduction to electronic devices, so you will be doing only working of the devices, mainly diode, BJT, JFET and MOSFET. And Okay, module sir. number 2 is the analysis of BJT amplifiers, which is completely derivation and numericals.
Model number 3 is the analysis of model number 2 we will be doing the analysis of biasing of BJT, JFET and MOSFET, and model number 3 will be the analysis of amplifier. तो ये completely numericals and analysis है. Model number 4 is again frequency response analysis, वो भी completely numericals है. So 2, 3, 4 and 6 they are completely numericals, and model number 5 में भी numericals आता है जिसमें हम power amplifier study करने वाले. Only model number 1 there is no numerical. Rest of the model there is a plenty of numericals are there. Do we have to refer any textbook or just study from your notes? No, notes you study, मतलब notes you will be getting, okay, from classes also, and I have my own handwritten notes also. Those I will be also giving you. But it's better you refer the book called Donald Niemann, Electronic Devices and Circuit by Donald Niemann, Tata McGraw publication. There is one more book, Electronic Devices and Circuit. Beg your pardon? Electronic Devices and Circuit. Electronic Devices and Circuits by Donald Niemann, N-E-A-M-E-N. Donald Niemann. Publisher is Tata McGraw. Soft copy of this book is also available on the internet. Sir, a textbook है क्या reference book है? It is a textbook recommended by the Mumbai University. So do you just suggest buying that? No, don't buy it. You refer it from the library. I told you na ki soft copy, free soft copy are available on the internet. Sir, I have Boylested's book. Don't refer Boylested. Boylested मतलब बाबा आदम का जमाना. बंद हो गया Boylested अभी. हाँ, स्टार्टिंग वर्किंग के लिए ठीक है, मगर analysis of Boylested is no more. Means nowadays in industry we don't follow the analysis given by the Boylested. Nowadays in the industry we follow the analysis given by Donald Niemann and Cedra Smith, because Boylested follows the old hybrid method model जो हमने long back 25 साल पहले हमने उसको यूज करना बंद कर दिया. Nowadays we in the industry also, while designing the circuit, we prefer transconductance model and hybrid pi model. Okay, so those models are explained in Donald Niemann and Cedra Smith. Don't refer the Boylested. And TechMax तो बिल्कुल मत refer करना. If you want to in future, if you want to crack the GATE exam, then Donald Niemann and Cedra Smith are the best books. Sir, वो दूसरे book का नाम बताइए एक बार. Electronic Devices and Circuit by Cedra, S-E-D-R-A, Cedra and Smith, S-M-I-T-H. सर बट अगर जो गेट नहीं दे रहा है तो वो रेफर नहीं करे तो चलेगा? ना, ऐसा कुछ नहीं है. मतलब देखो, मैंने तुमको पहले क्या बोला कि दिस इज द कोर सब्जेक्ट, ओके, एंड मैंने तुमको 90% बोला, बट इट इज 100% है कि दिस टाइम एग्जाम्स आर गोइंग टू बी ऑफलाइन, दे आर नॉट गोइंग टू बी ऑनलाइन. आज ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है कि आफ्टर सितंबर दे आर गोइंग टू स्टार्ट द स्कूल्स. तो जो भी तुम्हारा एग्जाम होगा वो ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा. एंड ऑफलाइन में तुम्हें कॉलेज में आके एग्जाम देना पड़ेगा. ओके, तो अभी वो ऑनलाइन की मजा निकल जाएगी और तुम्हें ऑफलाइन एग्जाम देना है. तो ऑफलाइन एग्जाम अगर तुमको पास भी होना है तो यू हैव टू refer the notes as well as the standard books. Whether it is a EDC, whether it is DSD, whether it is EIC, okay, just go through the standard books also. Standard books will give you more knowledge and they will give you more exposure beta. Okay, sir. And for all subject, soft copy of the books are easily available. Easily available. On the internet. अगर नहीं मिला तो मुझे बोल दो, मैं तुमको लाके दूंगा, सॉफ्ट कॉपी में अपलोड कर दूंगा. सर वो पीएन जंक्शन में जब इलेक्ट्रॉन होल के पास जाता है, वो रीजन पास करता है, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ
कुछ होता है क्या, मतलब कोई प्रॉब्लम होती है क्या पास करने के टाइम पे? नहीं बेटा देख, कैसे है ना, जैसे हम लोग बोलते हैं वाटर फ्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, बराबर है। अभी यहाँ पे होल है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसका चार्ज नेगेटिव है, इसका चार्ज पॉजिटिव है, सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन जाके होल के साथ कंबाइन हो जाएगा, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव कंबाइन हो गया, तो दोनों एक नहीं नहीं, दूसरे वो को जब रीजन को पास करता है तो मतलब रीजन से जो पास करता है तो रीजन उसको कुछ प्रॉब्लम देता है? नहीं नहीं बेटा, नहीं बेटा, क्या होता है ना, एन टाइप का कंडक्शन बैंड एंड पी टाइप का वैलेंस बैंड, उनकी लेवल मर्ज हो जाती है और एन टाइप से इलेक्ट्रॉन नीचे आके होल में कंबाइन हो जाते हैं, ओके सर। मगर उसको जंक्शन कुछ प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है। ओके, एनी अदर डाउट स्टूडेंट्स? If no doubt, then shall we close the meeting? Yes, sir. No doubts. Yes, sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. students. Bye, sir. Take care. Bye. Thank you, Thank you. sir. Take care. Thank you. Thank you, sir. Thank you, beta.